Dear students, today we'll be talking about inheritance. So, an inheritance. Yes, that's done. Each and everything. वालेकुम सर वालेकुम बेटा. सर ये जो दूसरा नहीं है फहद रहीम पली सर ये आसान नाम था ये मैंने सॉरी बेटा, वो कहाँ पे है? सर ये जो दूसरा वाला नाम नहीं है मेरा फहद रहीम पली जो वाला वो हसान है सर उसने मेरा नाम रखा हुआ है अच्छा, फहद रहीम पलीजो. No problem. Hassan Abdin and Fahad Rahim Palijo. Well done. Dear friends, you know what is chromosome made from? सर डीएनए Very good. In fact, chromosome is not the scientific term. If आप अगर literally ना, अगर आप इसका literal meaning देखें, obviously I won't write down, but just for your interest, chromo means colored. Have you heard of monochromatic light? One color light, white light is also called this. So soma is body. So chromosome is the colored object, colored body. So anyway, but what is chromosome when applied to cells? It's DNA, है ना? Chromosome is nothing. Chromosomes are made by DNA. And you know what do chromosomes contain? Khadija beta, chromosomes contain genetic information, है ना? Chromosomes contain genetic information in the form of genes. So genes. So we need to understand these things, genetic information in the form of genes. Now the question is, what is gene? See, every part of chromosome is not gene. Gene is only that part which codes for a protein. Dear friends, what is gene? Only that part of DNA that codes for a protein. थोड़ा सा DNA को हम recall कर लेते हैं, although we had studied this in biomolecules, but it's a bit recap of DNA. Yeah, dear friends, you know, DNA is single-stranded or double-stranded? Wow. Why don't you all speak for this? DNA is double-stranded. DS means double-stranded. Each strand is made by dash. Nitrogenous bases. Called what? What are nitrogenous bases, beta? A, T, G, C. Their full names are not needed. Basma आप थी इसमें? So देखो, A pairs up with T and G pairs up with C. There are 2 hydrogen bonds between A and T and 3 between G and C. Who has left us? Someone? Yeah. So if I draw this, see, this is one strand, this is another strand. And if I draw this a little wider, so you know, if this is A, the opposite will be, hello, T. If this is G, the opposite will be C. Done? So before we proceed further, let's have a look at what you call it. Questions on DNA. Although we did picture, yes. So will anyone help me solve this question? This one. Question 6. One strand of DNA
Hello, dear friends. Assalamu alaikum, Durushabar, Amid Haider, Fatima Bakar, और कौन absent है? Sanul Abdi, please join. Yes. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। One is AGT, and the other should be Kamil bhai. Other should be TCA. Lovely, TCA, है ना? And you know how to fill this one, Fahad? First is C, then is T, G and A. You know it, yes? C, T, G, A. जी सर अभी आपकी आवाज नहीं सर क्या कह रहे हैं? I was asking कि आप मुझे बताएं ना बेटा. अच्छा बात सुनो, एंटीबॉडी में ये एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजन, यस और नो? और एंजाइम्स बाइंड टू डैश, एस से. ओके मैं कह रहा हूँ एंजाइम्स बाइंड टू डैश, समथिंग विद एस, सबस्ट्रेट, एंड एंटीबॉडीज बाइंड टू डैश, एंटीजेंस. So the place where enzymes bind to substrate is called dash. And the place where antibodies join to antigen is dash. Place where antibodies join antigen is something on the pathogen. Antigen is something on pathogen. समझ लो ये पैथोजन है, ये एंटीजन है, इसके साथ एंटीबॉडी बाइंड करेगी. तो वो जो एंटीबॉडी जहां से बाइंड करती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट. एंड द सेम वे इफ दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, बेटा ये जहां बाइंड करेगा तो दिस प्लेस इज कॉल्ड एक्टिव साइट, यस और नो? द बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग से भी एक्टिव साइट तो पड़ेगी. जस्ट बाइंडिंग, आई मीन एंटीबॉडीज में बाइंडिंग साइट कहते हैं एंड एंजाइम में एक्टिव साइट. बट एट एंजाइम्स एक्टिव साइट what binds there? Substrate. And at antibodies active binding site, antigen binding. So they are very unique. Enzymes are different from each other. Enzymes differ from each other in having different dash. Active sites, yeah, active sites. And antibodies differ from each other in having different binding sites. Kamil bhai, both enzymes, all the enzymes are made up of proteins, but their active sites differ due to unique sequence of dash. No, enzymes. But the active sites differ because of different order of amino acids. बच्चों enzymes are made up of protein. Proteins are made up of, बस में बोलती क्यों नहीं है? Proteins are made up of, ऊंचा बोले प्लीज, amino acids. There are only 20 naturally occurring amino acids. In nature, there are on mere 20 amino acids. But the proteins are so many. Yes or no? आपको ABC आती है ना, A to Z तक, और उससे आप देखिए कितने वर्ड्स बनते हैं. Their varying combination. शायद पहले भी आपसे बात, जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि if a person has taught me A to Z alphabets ही कहते हैं ना, so I can say that he or she taught me every word of English language. Because every word is basically a varying combination of these. Yes or no? You understand my point? So the idea is amino acids are naturally occurring amino acids are only 20. How many? So their varying combinations give rise to different proteins. So every enzyme is protein. Welcome, Amir Haider. Every enzyme is protein, and proteins are made by amino acids. So an enzyme's active site differs from other enzymes active site, and what? Having different order of, thank you Khadija, different order of amino acids. कामिल भाई समझ आ रही मेरी बात? तो वेलकम दुरुशवार. इसी तरह जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ, वेट समवन हैज टाइप्ड फॉर मी. अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, अमीर है दुरुशवार, क्या हाल है आपका बेटा? आप आए बाहर आई. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम बेटा, टाइम पे आया करें, अदरवाइज वी लॉन्च अ कंप्लेंट टू योर पेरेंट्स. तो
तो फिक्र मत पड़ेगी कहीं मेरे अपने को ना बता दे. Okay, so basically, I'm sorry. जो हम क्या बात कर रहे थे? Yes, every enzyme has a special place where dash binds. आप नहीं चाहते हम आगे जाएं? तो बोलें substrate bind, and that place is called Active site. Wow, wow. Every active site is made up of dash amino acids. So active sites different from each other and having different order of amino acids. And the same way, antibodies are made up of amino acids. And there's a special place on antibody which binds to antigen. And the antibodies differ from each other and having different order of amino acids. और इसी तरह से डीएनए में डीएनए क्या है? डीएनए अभी मैंने आपको ना डीएनए इज जस्ट लाइक ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा था. डीएनए इज नथिंग बट दिस डबल स्ट्रैंडेड. There are two strands and each strand is a helical wavy. So DNA को आप कह सकते हो DNA is what? अभी हमने पढ़ा है double stranded and double helix. बात भाई, because both strands are wavy, both strands are helical, and each strand, बेटा देख लो, each strand is made by what? Oh, nitrogenous. Well done, Ra, means nitrogenous bases called A, T, C. And we also know that A pairs up with T, G pairs up with C. अब पता क्या होता है? पूरा डीएनए इन्हीं से बना होता है, ATG से. But some parts of DNA code for white color, some code for black, some code for free earlobe, some code for attached, some code for rolling, some make us, being able to roll the tongue, and some non-rolling, some tall, some tall. Different parts of DNA give us different features. We call them phenotypes. Yes or no? You understand it? Those different parts, you know how a part of DNA makes me have black color, yeah, brown, yeah, black, yeah, whatever iris, by making protein. So the DNA है ना, some parts of DNA make protein, and through that protein they give us certain feature. So that part of DNA is called gene. What is it called? But that gene has come from Arabic word jinn. Believe me. Because jinn means what? Invisible but having greater impact. Jinn nazar nahi aata na. They say jinn. You understand it now? Have you heard of jinn? Hello? Yes. Janeen. Jinn. It has all come from that. An Arabic child, a baby child before birth is called janeen. सर मेरी आवाज आ रही है? Yes. Because वो hidden मैं कह रहा था जी जी सर मैं कह रहा था कि मतलब ये जो आप कह रहे हैं सर जीन, सर ये भी डीएनए का पार्ट है, तो सर यानी कि जो एक पूरा जीन होगा मतलब उससे एक प्रोटीन बनेगा, मतलब वो एक प्रोटीन का कोड होगा पूरे. Exactly. We'll study that how from that gene DNA a protein is made. But what I want to say, okay, DNA is a double-stranded molecule, right? So every part of DNA is not gene. Only those parts of DNA are genes which code for a protein. So, बच्चों समझ आ रही है what is gene? Should we go back to our topic? Can you please help me recall? अभी तक हमने ये देखा कि what is chromosome? Chromosome is a thread-like. A chromosome is what? Hello? Thread-like structure. Thread-like structure made by DNA. DNA. And which contains genetic information in the form of genes. And Kamil हमें बता रहे हैं what actually is the gene. Yes, what is gene, बच्चों? Gene is the length of dash. DNA, which DNA. code protein. Thank you, Durishwar, Rahim. Sorry, Fahad. So gene is the length of DNA. Mr. Fahad, do you think every part of DNA is gene? No, sir.
only that part that codes for a protein. Lovely, lovely. So gene is length of DNA that codes for a protein. Codes for a protein. And what is this made from? Gene is made from what? My options are amino acids or bases. Amino Hello? acid. No. Gene is part of DNA. DNA is made by nitrogenous bases ATGC. ये यहाँ पे recall भी देख लो. ये biomolecule का था. Gene is actually every part of DNA is not gene, as Fahad told us. Those parts which may control, which code for a protein. अब सवाल ये allele क्या है? Allele is basically a Latin word. You don't need to write or remember, but I just write on allelomorph. देखो ये पुराना नाम है इसका allelomorph. Allelo मतलब alternative. ये ना लिखो The आप alternative part of gene. या alternative form. लेकिन हम तो इतना मुश्किल नहीं लिखते, हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं. व्हाट इज जीन? बेटा अ वर्जन ऑफ जीन. और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, आप यूं कर लो, अल्टरनेटिव. अभी मैं इसकी एनोटेशन बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन दैट कंट्रोल्स another phenotype of same trait. अब बच्चों देखो, हाइट इज अ ट्रेट, यस और नो? अ फीचर. इसके डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ. ईयरलोब इज अ ट्रेट. फ्री और अटैच्ड आर डिफरेंट फिनोटाइप्स, यस नो? टंग रोलिंग इज अ ट्रेट. Attached or free are the phenotypes. So one gene makes me roll my tongue, the other makes me not roll my tongue. So we'll say they are alleles of each other. Yes or no? If one gene makes my earlobe free, I'll say this is a gene for free earlobe. And the other makes my earlobe attached, I'll say that one is allele of this gene. But if you call that one to be gene, then this one will be the allele. नहीं समझ आ रही? देखो, allele that makes me have brown iris. There's a part of DNA that makes me have brown iris. I mean, that makes protein which gives me brown iris. तो हम कहेंगे that is gene for brown. और एक और part of DNA which makes me have black iris या blue iris. तो हम कहेंगे what is that? The allele of this. अगर आप बोलो नहीं जी, gene makes me have blue iris, तो मैं कहूँगा वो दूसरे वाला फिर इसका allele है. Different forms of a trait. जैसे देखो, gene of blood group has 3 forms. One that makes you have A, the other B, the other O. समझ आ रही है बच्चों? समझ आ रही बात? अब allele, बहुत अच्छी बात आपने की, वेरी गुड. एक बंदे में a person has 2 alleles only, one from each parent. A person has 2 alleles, बच्चों, one from each parent. ये मैं आपको, अच्छा चलें अभी अटेंडेंस हो रही है, मैं कह रहा था मैं बाद में आपको बोल दूं अटेंडेंस खुद. बेटा बासमा अभी दे दो, मैं सर को बोल लूंगा. So बच्चों, a person can never have more than 2 alleles. मतलब we have one from each parent. समझ आ रही है? If I have allele for tallness from one parent and allele for tallness from another, ये हो सकता है ना? Yeah, I may have allele for dwarfism from one and allele for dwarfism from another. I may have allele for tall from one and allele for dwarf from another. So I have different varying combination of alleles. Yes or no? यार समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? ए बी, हाँ. देखो खदीजा कह रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्लड ग्रुप ए का allele हम एक पेरेंट से हमें मिलता है और एक पेरेंट से बी का allele मिलता है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी. यस. तो allele मतलब इट डिपेंड्स. अब देखो मैं एक टर्म लिखता हूँ जीनोटाइप, आपको
you'll understand more what is genotype. So genotype is combination of alleles. बेटा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं ना. आर वी मेड ऑफ सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, sperm or egg. Or sperms have 46 chromosomes or 23, and eggs are 23. So मेरे पास one set comes from one parent, the other set comes from another parent. तो वो किस तरह कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, इसको जीनोटाइप कहते हैं. ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन भी है, जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप बच्चों समझ आ रही है? व्हाट इज जीनोटाइप? जेनेटिक मेकअप. अच्छा, एक और डेफिनेशन है, वो कर ले, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें डिफरेंशिएट करो फिनोटाइप क्या और जीनोटाइप. फिनोटाइप तो ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं. मुझे ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लगती. खैर बहरहाल मैं आई वुड प्रेफर आउटकम ऑफ जीनोटाइप. या आप वही कर लो जो बुक वाली है, ऑब्जर्वेबल फीचर्स. But it's not possible always to observe. I hope you all are attentive. Durashawar, Fahad, and Amir Haider, are you listening? Yes, sir. Well done, we have Basma, Khadija, Yes, sir. Amin, and Kamil with me. And my questions to you now is, look, if I have allele for blood group A from mother and allele for blood group, this chapter is very much important. Trust me, very much more than any other chapter in biology. तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो कैरी करूँ, ठीक है? तो we aim at finishing our course by next week at any cost. जी. तो उसमें यह है कि हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस बना लेंगे, लेकिन इसको हम डिटेल पर स्लो ही चलाएंगे. allele for blood group B from father, for example. देखो कोर्स खत्म होता है, बच्चे कई दफा चले जाते हैं, एंड असल में वही दिन होते हैं जब उनकी प्रेजेंस चाहिए होती है. तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने स्किप नहीं करना, क्योंकि असल तैयारी हमारी एग्जाम की उसके बाद शुरू होगी. डियर फ्रेंड्स, अब ये बंदा जो है ना, ये इसमें 2 एलीज है या 1 एलीज है? वाओ. सो दिस पर्सन विल बी कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस. वो मैं बताता हूँ. माशाल्लाह, वेरी गुड. सो बच्चों, हेटेरोजाइगस क्या होता है? व्हेन genotype AB. Well done, Fahad. नहीं पढ़ा जा रहा? Really? Yeah, heterozygous. So heterozygous is when a person, देखो zygus zygote से है. Hetero means different. समझते ना? Heterogeneous. So when a person has 2 different alleles, समझ आ रही है बेटा? Of a trait. इसको समझ रहे हो मैं क्या कर? नहीं समझ आ रहा? आपको ट्रेट बताएं बेटा. ट्रेट की डिफरेंट फॉर्म्स को फिनोटाइप कहते हैं. अब मैं बोलूंगा, आपने मुझे बताना है ट्रेट है फिनोटाइप है. हाइट, गुड, वेरी गुड. रोलिंग, Phenotype. यस. बासमा, दुरुशवार, गुड वन. देखो, एक ट्रेट की डिफरेंट टाइप्स को फिनोटाइप कहते हैं. जैसे हमने किया था इंटेलिजेंस में, कोई हायर, मोर इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, दे आर फिनोटाइप्स. आप लास्ट टाइम थी हमारे वेरिएशन वाले टॉपिक. तो स्किन कलर क्या है? ट्रेट या फिनोटाइप? ट्रेट. Phenotype. ट्रेट उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना, वो फिनोटाइप्स. यस और नो? जैसे ब्लैक, व्हाइट, जो भी है. हाइट इज अ ट्रेट, टॉल, डॉर्फ, 2 फिनोटाइप्स. समझ आ रही है? Blood group is whether rolling is a trait, roller, non-roller. Earlobe is a trait, attached, free, phenotypes. So heterozygous होता है when a person has 2 different alleles of a trait. And जैसे इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे मुझे मदर से मिल जाए टॉलनेस का और फादर से मिल जाए एलील किसका? टॉलनेस. समझ दो बेटा, एलील और जीन एक ही चीज है. होमोजाइगस. व्हाट इज होमोजाइगस? रामीन.
Sir, having same allele. Wow, having same allele. When a person has two same alleles, having same alleles of a trait. अच्छा, अगर दो allele different हो तो उसमें जो शो करे उसको डोमिनेट करे. When a person has two different alleles, one that shows itself is called dominant. अगले पेज पे जाऊं. When a person has two different alleles, the one that shows itself is called dominant. बच्चों समझ आ रही मेरी बात? मैं भी देख. जी Excuse me, sir. जी जी. तो मुझे ये बात समझ नहीं आई होमोजाइगस वाली. एलील तो सेम हो ही नहीं सकता. देखें, वो तो अगर जीन मदर सेम से हो. भी वाइट स्किन कलर का एलील मिल गया, फादर से भी वाइट का मिल गया, तो we'll have same alleles. Oh yeah, अच्छा. The way you got allele for tallness from mother, but unfortunately your father was average heighted, so you probably had allele for dwarfism from your dad, so your height is average. I think it's not so, but the thing is, see, go next. अच्छा, तो बेटा आप मुझे बताओ कि होमोजाइगस क्या होता है? When having same alleles, Same heterozygous allele. having Different. different alleles. तो जब दो different alleles हैं, so the one that shows itself is called dominant allele. The one that shows itself is called. Dominant allele. हैदर भाई आप कुछ बोल नहीं रहे. Dominant allele क्या होता है? In a dash person. Homozygous. No. Yes, Basma, please. Sir, in a heterozygous person. In a heterozygous person, allele that shows itself is called dominant allele. Yes, dominant allele. It is expressed. This dominant allele is represented. Yeah, it's expressed by big letter. Capital letter. Yeah. मतलब आपको दो लील देख के ना कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेंट है? तो जो बड़े लेटर से शो होता है. If we use one letter, मैं आपको बताता हूँ. If we use same letter, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और बच्चों जो रिसेसिव लील है ना, इसकी डेफिनेशन तो आप जानते हैं. ये वही होगा कि opposite, yeah, in a heterozygous person, allele which doesn't show, allele whose effect is masked. और बेटा ये किससे शो होगा? Small letters. Small letter. If we use same letter, अगर different letter यूज करोगे ना तो dominant recessive दोनों के लिए big letter हो. अब देखें एक मिसाल है कि A is dominant to O, B is dominant to O, but A and B are co-dominant. They both show. अब मैं बोलूंगा तो आपने मुझे बताना है. मैं यहाँ पे लिखूंगा जीनोटाइप और बच्चों आपने मुझे बताना है फिनोटाइप. अब देखो, अगर एक बंदे ने he had allele A from one parent and A from another, so what is blood group? Blood Sir, group A, Basma and Fahad, very good. और अगर उसके पास AO है, Sir, A. Dureshawar, Ramin, Khadija, what is this blood group AO? A. Yes. Sir, B. Wow. Yes. So we understand कि इस Sir, blood group O वाले की O. या इसका A, इसका B, it's A, it's B and this is O. So आपने एक चीज नोट की है कि रिसेसिव जो है ना, it shows only in homozygous condition. Yes or no?
ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो रिसेसिव एलील होता है ना, उसके इस if a recessive allele has a dominant with it, will that show itself? Will recessive show itself? मैं तो recessive क्या था कि in a heterozygous person, खदीजा गौर से सुनें इसको प्लीज। heterozygous मतलब you have different alleles. So in a heterozygous person, allele which shows itself is dominant and the one which doesn't show is recessive. तो मैं कह रहा हूं अगर रिसेसिव एलील जो है ना, अब यहाँ पे रिसेसिव कौन सा है? ओ। आप देखिए ए ओ आया तो ओ नहीं शो हुआ, बी ओ आया तो ओ नहीं शो हुआ। इट मींस ओ इज रिसेसिव टू बोथ ए एंड बी, इट डजंट शो इटसेल्फ। तो रिसेसिव एलील कब शो होता है? जब दूसरे साथ डोमिनेंट ना हो। तो रिसेसिव इज शोन ओनली इन व्हाट? होमोजाइगस। यस और नो? रिसेसिव इज शोन ओनली इन बेटा homozygous condition. It's very important. You understand my point? जी जी सर ये जो आपने एग्जांपल दिया सर, इसमें तो सर ये ए और बी तो सर कोल डोमिनेंट्स हैं सर। अगर अगर ओ है सिर्फ वो रिसेसिव है, तो अगर ए बी आ गए तो सर उसमें तो ए बी होगा, उसमें पता कैसे चलेगा रिसेसिव कौन सा है? हाँ, ए और बी तो उनमें रिसेसिव होता ही कोई नहीं है। दे शो देमसेल्व्स। आई थिंक वी कैन क्रिएट वन मोर बॉक्स हियर। एक और बनाते हैं। मेरा तो किसी का भी वो नहीं है, लेकिन मेरा वो नेगेटिव। हाँ ना, ये होता है ना, ये हम क्वेश्चंस करेंगे। यस, डोंट वरी, ट्रस्ट योर identity. Save this. If this is what I had written this A, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A. And if it is A B, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? Yeah. So the thing is A and B are codominant. जो आप बात करें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है, आगे हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अभी उस पर हम जा रहे हैं। तो हमें समझ आ गई बेटा कि आप लोग बताएं कि रिसेसिव एलील कब शो करेगा? या रिसेसिव एलील will show only in dash conditions. दुरुशवार, जल्दी से बताएं। अमीर हैदर, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस। नहीं, अगर हेटेरो मतलब दो डिफरेंट एलील आ गए तो फिर रिसेसिव तो नहीं शो करेगा ना सर होमोजाइगस। होमोजाइगस। सर मुझे समझ ही नहीं आ रही, सो सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आ रही। देखें, रिसेसिव होता है जो अगर अगर देखें, हेटेरोजाइगस क्या है? अ पर्सन विद टू डिफरेंट एलील्स। गॉट इट? यस सर। तो हेटेरोजाइगस में जो एलील शो करे उसको कहते हैं डोमिनेंट एलील, and the one which does not express itself is called recessive allele. Did you get it? बेटा आप मुझे ओके करें, फिर मैं चलता हूँ। In a heterozygous person, allele which shows itself is called dominant, and the one which doesn't show itself is called recessive. ठीक है? मतलब जो कैपिटल लेटर में वो डोमिनेंट होगा और जो स्मॉल लेटर में रिसेसिव होगा। नहीं, हाँ, यहाँ तो हमने रिसेसिव के लिए भी बिग लेटर यूज किए हैं, बिकॉज आपने डिफरेंट लेटर यूज किए। अच्छा, मैं आपकी कंफ्यूजन समझ गई हूँ। ओके ओके, वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब सर आप आपने को डोमिनेंस को और उसको अलग मिक्स कर दिया। आप यहां से समझ जाएंगे बेहतर तरीके से। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल allele for tallness, let's say allele for tallness is dominant। यहां पे एग्जाम्पल कर रहे हैं टू allele for जी फाद, बिल्कुल, allele for dwarfism। तो दुरुशवार आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आप बताइए और फिर उनके बाद हम किससे पूछेंगे। ठहरे, लेट मी चूज एंड फिर फाद मुझे बताओ कि टॉलनेस को किससे शो करूं मैं? allele for tallness should be represented with what? Which letter? कैपिटल ए। कैपिटल। ये एज्यूम कर लो ना। तो टॉलनेस का allele किससे होगा बेटा? साद खदीजा, टॉलनेस का allele किससे होगा? बिग टी। और बच्चों, डॉर्फिज्म का allele किससे शो होगा? वाओ, स्मॉल टी। अब मुझे बताएं, एक बंदा टॉल है,
दूसरे शवाद जल्दी से बताएं ये टॉल है क्या बेसिकली if Mr. Philip is tall so means this what am I telling you कि Mr. Philip is tall am I telling you phenotype या trait या genotype सॉरी ट्रेट पहले सही कह रहे थे phenotype है ना क्योंकि देखो ट्रेट तो क्यों? हाइट है ट्रेट इज हाइट तो उसकी डिफरेंट फॉर्म है टॉल या शॉर्ट है ना सही है ना तो जब मैं सर जी जी सर अगर मतलब सर अगर टॉल हुआ तो सर या तो कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा वाह ना? वाह वाह वेरी गुड तो देखिए मैं फिर लिखता हूँ मिस्टर फाद इज वेरी क्विक इन गेसिंग दिस अब बेटा आप देखें कि जो टॉल है ये फिनोटाइप है यस और नो सबको समझ आ रही है कि फिनोटाइप है आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे दुरुशार बेटा समझ आ रही है जी सर आ गई अब हाँ तो आपने मुझे बोलना है ताकि मैं आई शुड नो यू अंडरस्टैंड अब माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो टॉल बंदा है वो क्या होगा अब आप कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है उसका जीनोटाइप है बिग टी और कुछ कहते हैं नहीं उसका जीनोटाइप है बिग टी स्मॉल टी शुड आई एग्री विद बोथ खदिजा सर देखें हाउ कैन समझ इट है बी ना if I have big T from both parents if I have allele for tallness from both parents I'll get tall if I have allele for tallness from one and allele for dwarfism from another I'll still be tall why because tallness allele is dominant ये हमारी assumption थी ना उसकी बेस पे क्वेश्चन होगा तो ये हमने क्या गैस किया बेटा टॉल बंदे का जीनोटाइप गैस किया यस और नो और जो बंदा डॉर्फ है डॉर्फ दुरेशवार जल्दी सर से स्मॉल टी वाह फात कह रहे हैं कि ही मस्ट बी स्मॉल टी क्योंकि अगर वो बिग टी स्मॉल टी होता तो वो तो बिग टी शो हो जाता गॉट इट कामिल भाई कैन अ डॉर्फ पर्सन बी बिग टी स्मॉल टी नहीं हम एज्यूम कर रहे हैं ना ये आपकी एग्जाम की एग्जाम आपकी सर्विस की एग्जाम्पल है तो बेटा आप लोग समझ रहे हो ना कि हुज जीनोटाइप इज इजी टू गैस डोमिनेंट या रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव का यार देखो भाई बच्चों अगर एक बंदा मिस्टर फिलिप इज टॉल एंड हिज वाइफ मिस रॉकर इज डॉर्फ तो मिस्टर फिलिप कुड बी बिग टी और बिग टी स्मॉल यस और नो if you inherit a big T मतलब allele for tallness from both parents you'll grow tall yes or no याद है हाइट एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता